గణతంత్ర వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. उत्साह उत्कंठा उनके चेहरों पर पढ़ी जा सकती है. And the President of India, Shri Pranab Mukherjee, along with the chief guest of this year's parade, the Crown Prince of Abu Dhabi, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, descending the 32 odd steps that come down and lead into the forecourt of Rashtrapati Bhavan, where they shall be saluted by the President's bodyguard and then make their way towards the saluting base here at Rajpath. A wonderful view of the President's bodyguard, and here our chief guest along with the Supreme Commander of the Armed Forces, the President of India, Shri Pranab Mukherjee. This is the Crown Prince's second visit to our country in less than a year, which of course signifies the close bond between India and the United Arab Emirates. इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन, इनकी अगवानी करते हुए रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर, रक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष रामराव भामरे, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे. इस अवसर पर उन्हें सेना के तीनों अंगों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा. Prime Minister Narendra Modi will now lay a wreath at the memorial, which will be marked by 2 minutes of silence. Silence when time stands still and hearts beat strong, a silent flame lifts into song, bowing our heads yet pride standing tall, a billion prayers in gratitude call, the silence quietly saying it all. Odar Senagan! Salamem! Shush! Odar Senagan! Shoot! Shush!
Quds! Adar Sena Guard! Salamat! Schuss! Adar Sena Guard! Bajab! Schuss! कृतज्ञ राष्ट्र का अमर जवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के पश्चात आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार लिखते हुए इंडिया गेट पर आयोजित समारोह का एक ऐतिहासिक संकलन है। The buglers sounding the rouse, the guard commander ordering salami shastra or salute with arms, marking the completion of the 2-minute silence. The Prime Minister signing the ceremonial book, penning his thoughts and feelings, pride and solemn tribute. When duty beckons, the rest of the world ceases to matter. The ability to offer oneself, surrendering desire, dropping all doubt and conquering all fear. That's what makes our men and women in uniform so special. And as the Prime Minister leaves India Gate after the wreath-laying ceremony and moves towards the saluting base at Rajpath, he carries with him the emotions of a nation that acknowledges in gratitude those who laid the foundations of a deep and pride-inspiring past for a present that holds the strong promise for an equitable and bright future for the nation. अमर जवानों के बलिदान को याद करते हुए कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री ने शहीद सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की। हम घरों में चैन से सोते हैं क्योंकि हमारे वीर जवान देश की रक्षा में जागते हैं। प्रधानमंत्री इंडिया गेट से प्रस्थान कर रहे हैं राजपथ की ओर। और इधर राष्ट्रपति भवन से माननीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उनके साथ आज के समारोह के मुख्य अतिथि अबू धाबी के युवराज प्रस्थान कर रहे हैं राजपथ की ओर। ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन का ये प्रांगण और अब थल सेना अध्यक्ष और इसके पश्चात माननीय रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा मंत्री यहां से प्रस्थान करेंगे मुख्य सलामी स्थल के लगभग राजपथ भले ही धूप निकले या बादल छाए या कोहरा आए या तापमान कितना भी गिर जाए, हर वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह की छटा निराली होती है। और ओसीपी लेफ्टिनेंट कर्नल उज्ज्वल उपाध्याय के नेतृत्व में विस्तृत व्यवस्था की गई है और very cheerful faces and smiling young people. And meantime, we've had the Defense Minister, Mr. Manohar Parrikar, returning from India Gate, and also Dr. Subhash Ramrao Bhamre, Minister of State for Defense. The three service chiefs coming in one by one: General Bipin Rawat, Admiral Sunil Lamba, and Air Chief Marshal B.S. Dhanoya.
Now they'll soon be receiving Prime Minister Modi in a while from now. And even now, our minds reverberating with images of that poignant ceremonial for the Amar Jawan. I am an unknown soldier. The Prime Minister, On whose bed list also now returning after paying homage to the immortal soldier, moments where time stood still in reverence and remembrance to the fallen heroes. The entire entourage now of cars and vehicles moving steadily towards us here at Rajpath. Where a grateful nation pays tribute to the martyrs who gave their yesterday such that we have a better day. Men who sacrificed their lives